इसको पावर ऑन होने देते हैं. Sorry, this was the so we are having this 12:30 to 2:30. Swim. This was the Sort of not competent. Some Google obeyed a soak Khobri engine by those Khobri, Pinky Khobri, Ranjan Kumar, Chatuviya, Prime. This one gets in here. Kaveri, Saurabh, Tasip, Beachlock, Beachlock, Beachlock. So here the things got power. यहाँ पे जो हमारे term है वो power on. So now what we are going to have? So let's log in as an administrator. यहाँ पे log in करते हैं हम लोग as an administrator. So the password was 1234. The password था इसका 1234 था. Present. तो फिर तुम्हारे से कुछ So here the things got power on. चीजें power on हो गई. And what is the next option that we have to do? Next चीज next term क्या है जो हम लोग को करना है? So yesterday before going on the next term, I have shown you कि why it is known as an administrator. ये administrator क्यों कहना? Why? Because it is having all the administrative privileges. So now after enabling this account, whatever the option I am going to do, whatever the operation I am going to perform, everything will perform by default as an administrative access. जो भी चीजें यहाँ पे चलेंगी, वो सारी चीजें by default administrative access पे चलेंगी. It is not going to ask me anything. There is nothing as such कि I need to open the application and I need to set it run as administrator. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमको कोई भी एप्लीकेशन अगर हम रन करेंगे तो वहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको करना है. नॉट एट ऑल. The thing is going to process on it. चीजें जो है वो खुद पे प्रोसेस होंगी. This is what it called as. Understood guys? समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Very nice. So what is the next step? What is the next task that we have to do? Next phase कौन सा है जो हम लोगों को करना है यहाँ पे? सर्च करना. क्या करना है? टाइप करना है सर इसमें. क्या करना है? हाँ बताइए. LUSRMGR. ठीक है. .ms. Yes sir. ठीक है. यहाँ पे क्या करना है अब हमको? यूजर में जाना. क्लिक ऑन यूजर. क्यों जाएंगे? किस पर्पस के लिए हम यूजर में जाएंगे? क्या पर्पस है मेरा वो चीज करने का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई हैव टू परफॉर्म? सर हमको पढ़ाना है. एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट. एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट. तो अभी जो लॉगिन किए थे वो किस चीज से लॉगिन किए थे? राइट नाउ इफ आई लॉग्ड इन तो व्हिच यूजर व्हिच एडमिनिस्ट्रेटर आई वाज लॉग्ड इन? कल ही तो एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किए थे लोग. समझ में आई बात? कल ही तो एडमिनिस्ट्रेटर को एक्टिवेट किया हम लोग. या नहीं किया? Yes. किए थे राइट.
So now the next task that we have to perform, next task जो हम लोग को perform करना है वो perform करना है कि आप user कैसे create कर रहे हैं. How we are going to create a user. So now we have to create one user. अब हमको एक user बनाना है, correct? अब हमको क्या करना है? एक user बनाना. So I will go with LUSR MGR. I will right click on the user. यहाँ पे right click करेंगे user के ऊपर. Over here I am having the option clear, new user. यहाँ पे मेरे पास option available है new user. So I will click on this. As soon as I click on the new user, this prompt appear. जैसे हम new user पे हमारे पास ये prompt appear होगा. Where I need to give the username, full name, description, password, user, confirm password. So what is the name you suggest? कौन सा name आप बता रहे हैं? Tell me quick. Any name? Ram. Huh? Ram. Yes, sir. Ram. Let's go with the Ram full name. Leave the Let's type the description. If you want, then you don't want. So in my case, I'm not typing the description. I will add the description later on. हम बाद में description add कर देंगे. Password what I am giving 1 2 3 4. Password हम इसका क्या देने हैं 1 2 3 4. फिर से 1 2 3 4 confirm कराना है. After that we are having 4 options. यहाँ पे मेरे पास 4 option. User must change password at next login. User cannot change password. Password never expires. Account is disabled. Account is disabled. You all know the function of account is disabled. सबको पता है इस account is disabled का function. तो disable right? कि हम इसको टिक आउट कर देंगे तो मेरा account disable हो जाएगा. Correct guys? Yeah. Now, what the thing we have? We have the term password never expires. इसके बाद जो हमारे पास term है password never expires. What does it mean? What the meaning of this statement says कि password never expires. इसका मतलब क्या है कि password never expire होना चाहिए? Meaning the mean says over here password never expire is कि in every operating system, हर एक operating system के ऊपर we are having the age. हमारे पास age होता है. Age of password. ठीक है? Age of password होता है. That we call it as a life cycle. जिसको हम लोग life cycle बोलते हैं. So the life cycle can be of 40 days, 45 days, 365 days, 1 year, 1 month, whatever, depend on the user. किसी भी चीज का हो सकता है वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है. वो कितना भी हो सकता है पासवर्ड पॉलिसी के अंदर. So when I say password never expires, जब हम टिक कर देते हैं कि password never expires, तो it will override this all the statement. ये इस पूरे स्टेटमेंट को ओवरराइड कर देगा. Means I am having the password 1 2 3 4. It will be 1 2 3 4 unless and until the user is over. जब तक यूजर है तब तक उसका यही पासवर्ड रहेगा. इसके ऊपर कोई भी एक्सपायरेशन नहीं होगा. This is not going to expire at any point. If I select this one, password never expires. अगर हम password never expire करते हैं तो ये कभी भी expire नहीं करेगा और ये तब तक उस यूजर का पासवर्ड रहेगा जब तक वो यूजर यहाँ पे रहता है. In this particular point. Understood? Yes, sir. समझ में आया ये point? ठीक है. Yes, sir. Now, the next point says user cannot change password. जो next point कहता है user cannot change the password. If I'm giving him the password 1 2 3 4, हमने उसको पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4, and I check this option. हमने इस ऑप्शन को चेक ऑन कर दिया. So this 1 2 3 4 is not going to change at any cost. ये 1 2 3 4 user change नहीं कर पाएगा at not a single point. Even though by going to the user account, going to the control panel, going to the user settings and trying to change the password from there, not eligible. User settings में जाके वहाँ पर से भी अगर ये पासवर्ड को चेंज करना चाहे नहीं कर सकता है. नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि हमने डिसेबल कर दिया. So who can only change the password? Admin. इस पासवर्ड को सिर्फ कौन चेंज कर सकता है? Admin.
समझ में आया ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, I'm having the option user must change the password at next login. यूजर अपने पासवर्ड को चेंज करेगा, ये मस्ट है कि यूजर को चेंज करना है पासवर्ड अपने दूसरे लॉगिन पे। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि यूजर कैन नॉट चेंज। एक ऑप्शन क्या कह रहा है कि यूजर कभी भी कहीं पे भी जाएगा तो पासवर्ड को चेंज नहीं कर पाएगा। यूजर कैन गो एट एनी पॉइंट, ही इज नॉट एबल टू चेंज द पासवर्ड। बट नाउ आई एम सेइंग कि इट इज मैंडेटरी फॉर द यूजर टू चेंज द पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। जैसे ही वो लॉग इन करेगा विद द पासवर्ड 1234, as soon he is going to log in with the password 1234, it need to change this password. उसको ये पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। Why? ऐसा क्यों? हम इसको मस्ट क्यों? Why we come up with this the mandatory one? I can simply say कि यूजर कैन चेंज द पासवर्ड। हम सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन हो जाता, यूजर अपने पासवर्ड को चेंज कर लेता। हमने ऐसा क्यों कहा? Why we said this thing? We said this thing. Yes, please. पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा वो तो चेंज करना होगा, मतलब कुछ टाइम पीरियड होगा उसका कि उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। और किसी का कोई ऑप्शन? सर एक होनी उसके लिए कि मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, ये होना ही चाहिए। नेक्स्ट लॉगिन होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? वही तो पूछ रहे क्यों होना चाहिए। यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे कि यूजर कैन चेंज द पासवर्ड, यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। हमने ये क्यों कहा इट इज इम्पोर्टेंट टू चेंज द पासवर्ड, यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड। यूजर को इम्पोर्टेंट है अपने पासवर्ड चेंज करना। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए टेम्पररी पासवर्ड है इसलिए। बहुत बढ़िया, वेल ट्राइड एवरीवन, बहुत अच्छा काम, बहुत लाइक द वेरी गुड आंसर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये जरूरी क्यों है। सो आई एम हैविंग द पासवर्ड 1234, मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया 1234, करेक्ट? अंडरस्टूड? फॉर अ यूजर राम, किसके लिए? एक यूजर राम है जिसका पासवर्ड हमने दिया 1234। हु नोज, लाइक हाउ मेनी पीपल नो कि द राम हैज 1234 पासवर्ड? कितने लोगों को यहाँ पे पता है कि राम का जो पासवर्ड है वो 1234 है? कितने लोगों को पता है? 2 लोगों को पता है। चलो आपको ये बता दिया, इट इज नोन बाय 2 पर्सन्स। हु आर दीज 2 पर्सन्स? ये 2 पर्सन कौन कौन है? एनीवन? यूजर एंड User and admin. यूजर एंड एडमिन। वेरी नाइस गाइस, यूजर एंड एडमिन, वेरी वेल गाइस। यूजर है और एडमिन है, ठीक है? नाउ व्हाट हैपन कि राम इज यूजिंग द पासवर्ड 1234 एंड देयर इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट फाइल। यूजर एक काम कर रहा है और वहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है VVI, that at any point you cannot delete this file. किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इस फाइल को लूज नहीं कर सकते। यू हैव टू बी विद दिस फाइल। ये फाइल आपके पास होना चाहिए, यू लाइक इट शुड बी प्रेजेंट इन योर डिवाइस। आपके इस डिवाइस में प्रेजेंट होना चाहिए। व्हाट हैपेंस कि दिस फाइल गॉट डिलीटेड। क्या होता है? ये फाइल डिलीट हो गई। किसने किया, क्या किया, ये पता नहीं, बस डिलीट हो गया। नाउ व्हेन द प्रॉब्लम रेज्ड, when the query raised, so whom we are going to point it out? These both things. Who is in the suspicion? कौन लोग suspicion में हैं? ये दोनों हैं, admin and a user. They both, because admin knows the password of Ram and Ram knows the password of this account. Who deleted this file? Might be the user, might be admin. So what the Ram is saying, कि look, I did this task and my admin is not in the favor of me. Admin मेरे favor में नहीं है. We are having some of the problem disputes in between us. कुछ problem है हम दोनों के बीच में. So for just removing me from this organization, he deleted this file. लीजिए. क्या बोला user? कि देखिए ऐसा है कि मेरे और admin के बीच में कुछ अच्छा ताल्लुकात नहीं है. Right? We are not having a good relation. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको डिमोटिवेट करने के लिए मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से निकालने के लिए एडमिन ने उस फाइल को डिलीट कर दिया। एडमिन के पास इतना टाइम है कि वो यूजर का फाइल डिलीट करेगा?
That is the thing. But all the focus is on the admin now. अब सारा focus admin के ऊपर है कि might be he did it, हो सकता है ये करेगा, because the admin is the user who is having the whole authority. Admin एक user है जिसके पास पूरा authority है. He can do without any kind of permission. वो राम के यूजर से भी लॉगिन कर जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा. Then what is going to be, guys? Admin is going to be suffer. Admin यहाँ पे suffer करेगा. Right? To recover from all this problem, to overcome with this sets of the disputes. इन set of the dispute के overcome करने के वजह हम यहाँ पे आए कि user must change the password at next login. So now admin has created the password 1234. When he logged in with the password 1234, at the same time the user Ram need to generate the password. User Ram को password generate करने की जरूरत पड़ेगी. And whatever the password he is going to generate, it is not known by the admin at any point. Even though they are in the same computer, even though they are in the same window, the admin cannot fetch the password. वो दोनों सेम ही कंप्यूटर पे हैं, सेम ही विंडो पे हैं, लेकिन फिर भी एडमिन उसके पासवर्ड को फेच नहीं कर सकता है. That is what it says. The user must change the password at next one. यहाँ पे ये कहता है कि user must change the password at next one. Is this understood, guys? समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया सभी को? Is this understood by everyone? Yes, sir. Yes, sir. So let's have a look over what? Let's have a look over. User must change the password at next one. इसको प्रैक्टिकल में देखते सर हैं. इस ऑप्शन को प्रैक्टिकल में देखते हैं. Now in this option you will find it out कि as soon as I select user must change the password at next login, these two option get disappear. हम जैसे ही बोलते हैं कि user must change the password at next login, वो ये दोनों ऑप्शन क्या होता है? डिसेबल हो जाता है. Why? When the user is changing the password, he cannot say कि password never expires. अगर यूजर उस चीज को सेंड कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पासवर्ड वो जो यूजर का है वो कभी नहीं एक्सपायर करेगा. क्यों? क्योंकि अगर उसको कभी नहीं एक्सपायर कराना है तो उसको कहीं ना कहीं हमको स्टोर करना पड़ेगा. If that password is not going to expire, then I have to make the storage of that particular password. And when the password gets stored, it might be accessed by the admin. अगर पासवर्ड कहीं स्टोर होता है तो एडमिन एक्सेस कर लेगा. That is the reason. Clear? Understood, guys? Yes, sir. Yes, sir. Here we will click on the create button. यहाँ पे हम create button पे क्लिक करेंगे. इसको क्लोज करेंगे and here you can see we are having a RAM. यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरे पास RAM user है. We are having a RAM user over here. Okay? Right, guys? So now let's log in with RAM. अब RAM के साथ login करते हैं. Here we go. Sign out. Previously I was having RN and administrator. पहले मेरे पास RN और administrator था. अब मेरे पास RAM ही है. है ना? देखा आगे. तो इसका क्या पासवर्ड दिया था हमने? 1 2 3 4. यही पासवर्ड दिया था. 1 2 3 4. अब I have selected the option user must change the password at next login. यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है user must change the password at next login. Press enter. Welcome. The user must be changed if user password must be changed before signing. आगे ऑप्शन कि आपको ये पासवर्ड साइन इन करने से पहले चेंज करना पड़ेगा और ये मैंडेटरी. I will say okay. What is the new password? QWERT. Sorry. That's 1 2 3 4. New password is QWERT. QWERT. Now, whatever this password I have given the QWERT, it is not known by the admin anymore. अब ये जो पासवर्ड है ये एडमिन को नहीं पता है. अब ये सिर्फ मुझे पता है. This is only known by me. And at any cost, you admin cannot fill this password. और किसी भी टर्म पे
एडमिन इस पासवर्ड को फेच नहीं कर सकता है. योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड. अब आपका ये पासवर्ड चेंज हो. क्लिक ऑन ओके. एनीथिंग इज डन. क्लियर गाइस? समझ में आया? ओके सर. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. आप किसी को कुछ पूछना है? यस सर. सर क्या जी? जो आपने अभी बताया था कि पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, उसमें आपने ये बोला कि पासवर्ड की एक टाइम पीरियड होता है कि 1 डे 2 डे 30 डेज. तो वो कब होता है, मतलब कि हम पासवर्ड को की पर्टिकुलर टाइम के लिए कि सेट करते हैं? वो पॉलिसी बनता है. वो पॉलिसी वो जब आप पॉलिसी बनाते हैं, ग्रुप एड पॉलिसी, जिसमें पासवर्ड पॉलिसी को हम डिफाइन करते हैं, तो फिर वहाँ पे वो चीजें फिक्स होती हैं. विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन हाउ टू सेटल. पता नहीं भाई बनाना है भाई इसको. लैपटॉप सोचना है तुम्हें को नोट करना है. सेट ओवर अपडेट मारना है. रात में तो फिर फ्री चलता है ना. यही करना है. टेंट प्राइवेट सेटिंग्स या प्राइवेट सेटिंग्स को चूज फॉर डिनाई एवरीथिंग स्ट्रॉन्ग पहलवान हूँ. एक्सेप्ट एंड हियर वी कम अप विद द यूजर. सो यहाँ पे हमारे पास विंडो. दिस इज द थिंग हाउ इट प्रोसेस. ये चीजें ऐसे प्रोसेस कर. ओके, नाउ जस्ट टेस्ट. दिस इज द नॉर्मल यूजर. ये एक नॉर्मल यूजर है. तो एक बार टेस्ट करते हैं कि आर वी एबल टू चेंज द नेम ऑफ द कंप्यूटर. क्या हम कंप्यूटर के नेम को चेंज कर सकते हैं या नहीं? बिकॉज ही इज अ यूजर. दिस राम इज अ यूजर. ये जो राम है एक यूजर है. आई वांट टू चेक दैट. हमको ये चीज चेक कर. सो सिंपल गो टू विंडो आर and I will type sysdn.cpn. This is, I will let you know what is this. Enter. What the thing appears? User account control. Do you want to allow this app to make changes to your device? Change computer settings. Administrator password is required. यहाँ पे administrator password required है because you are not eligible to perform this operation. आप eligible नहीं है इस operation को perform करने के लिए. That is the reason you need administrative password. इसलिए आपको administrative password की requirement है. Understood guys? देखा, समझा, समझ में आया? Right. Any set of the query वही है guys. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? सर ये जो आपने करवाई इसको नोट भी करवाओगे या फिर बस प्रैक्टिकली चलेगा अब अपने यहाँ? एक मिनट. किसे पूछा? अभी अपन ने न्यू यूजर क्रिएट किया था ना, उसका स्टेप नोट करवाओगे या फिर बस प्रैक्टिकली ही चलेंगे अब? एक मिनट. आप कल क्लास में? यस सर, मैं था ना कल क्लास में. अशोक. यस सर. आप थे? यस सर. तो वहाँ पे चीजें मैंने दिखाई थी क्या कैसे कैसे हो. आपने नोट डाउन किया वो सारी चीजें? नहीं सर किए थे ना वो सारे स्टेप्स नोट डाउन किया? यस सर. क्या क्या स्टेप्स थे?
अच्छा सर, कल वो नोट डाउन हो गया तो आज प्रैक्टिकल करवा रहे हो आप? सॉरी सर, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा नया टॉपिक चल रहा है। अरे भगवान, कहाँ है आप अशोक? वो सर मेरा नेटवर्क तो मैं फिर से ज्वाइन हुआ ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि नया टॉपिक चल रहा है शायद अभी। कोई प्रैक्टिकल हुआ कहाँ? कल तो सिर्फ स्टेप शेयर किया था मैंने। Yes, I have just shared the steps with you all, and right now I am demonstrating the things. yes sir. ठीक है? These are the things. Anything else you want? So this is understood by everyone. ये चीजें समझ में आ गई? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? No sir. Again asking guys. Quite well. So what is the next thing that we have to perform? अब next क्या है जो हमें perform करना है? Disable the user account. Disable the user account. और user account को disable करने के लिए हमें क्या करना होगा? Admin account से login करना। Disable करने के लिए हमें admin user से login करना। Correct? So if I try to perform disabling the user from here, so let's say we are able to perform it. हम यहाँ पे user पे हैं, एक बार देख लेते कि हम कहीं हो जाए. It might be done. So I am able to open the LUSRMGR. हम तो LUSRMGR open कर पा रहे हैं. तो हो सकता है कि I am able to disable the things. It's quite possible कि I am able to disable the user. If I go to users, I want to disable this RN. अब हमको ये RN को disable करना. Right click, properties, disable, apply. Now it is saying permission denied. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका permission denied है. श्याम Means you don't have the permission. आपके पास permission नहीं है to perform this operation. But I am able to open this. So the thing says कि you are having the same interface, you are working on the same thing. आपके पास same interface है, आप same चीज के ऊपर काम कर रहे हैं. That is the reason you might have, the user might have the look of some amount of things. User कुछ चीजों को देख सकता है, but it cannot perform the any set of operations. वहाँ पे वो कुछ भी operation को perform नहीं कर पाएगा. The thing is in front of it. ये चीजें यहाँ पे clear guys? ठीक है? So yes sir, let's log in with administrator. अब यहाँ से administrator से log in. So let's log in with administrator. 1, 2, 3, 4. Here the thing you can see कि we just logged in with our administrator. यहाँ पे हम लोगों ने अपने admin के साथ login कर लिया, right? Now which task we have to perform? अब हमें क्या perform करना है? So we have to perform कि we want to disable the user. अब हमें user को disable करना है. So window R, sorry, window R, LUSR mgr.ms. Press enter. This thing open. We'll go
go to user, very easy. हम user पे जाएंगे and I want in progress के ऊपर point out हो रहा है black arrow की जो downward तरफ point out कर रहा है. This is the thing that we have. This is the thing that we have over here. This is what is called as. यही चीज ये कहता है. Clear guys? And if we check over here, let's sign out. You'll find only administrator and RAM. आपको सिर्फ यहाँ पे administrator और RAM मिलेगा. आपको यहाँ पे ये नहीं मिलेगा. आपको क्या बोल रहे हैं? You will not able to find the RN over here. RN is not here. Clear? Understood? Yes, sir. yes Very well. Now, what is the next thing, guys? Next चीज क्या है? To make a user administrator. To make a user as an administrator. And yesterday I have made one statement कि after seeing this demonstration, you have to write down the step and send it to me over the chat box. And that step need to be handwritten. और वो जो step होगा वो handwritten होगा. Correct? So let's have a look. I will simply go to the window R. हम यहाँ simple window R पे जाएंगे. And I will go with lusr mgr.msc. हम यहाँ पे simple lusr mgr.msc पे जाएंगे. Now, I will go to the user. First I will check कि whom I want to make. हमको किसको बनाना है user? किसको बनाना है? So I want to make Ram as an administrator. हमको Ram को administrator से बनाना. Then what I have to do? What I have to do? I have to simply add Ram to that particular group. हमको simple Ram को उस particular group में add करना होगा. That we have seen over here. If Kaustuk want to be in the cloud infra, remove the Kaustuk from that virtualization, put it into the cloud infra. Or Anusha want to be in WinAdmin as well as cloud infra as well. Simply add Anusha to this cloud infra. That is the thing. यही चीज है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, here if I talk, I want to make Ram as administrator and Ram is in cloud infra. अगर Ram को administrator पढ़ना है और वो cloud infra पढ़ रहा है, तो simple है कि उसको भी हम administrator के class में add कर देंगे. Simple. So what I will do over here, I will add Ram to the administrator group. हम यहाँ को Ram को administrator group में add कर देंगे. For that, I will go to groups. इसके लिए हम groups में जाएंगे. And I will find the administrator group over here. यहाँ पे administrator group पे right click, go to properties, click on add, type the name, click on check names over here, click on OK, click on apply, click on OK. Thing is done. Now Ram is an administrator. Ram is an administrator. If I go to user, right click on Ram, properties, member of administrator. Done guys. If I cancel, let's log in with Ram now. अब हम लोग log in करते हैं Ram से. And previously I was unable to change the name of our computer. पहले हम computer का name नहीं change कर पा रहे Ram से. So let's have a check.
systm.cpl. So previously it prompted me the password and now I'm able to open. पहले हमको ये पासवर्ड ओपन किया था कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस चाहिए, अब नहीं चाहिए. अब आप भी एडमिनिस्ट्रेटर तो अब आप कर सकते. रीजन. So now I'm disabling the administrator account. अब हम यहाँ पे जो actual administrator है उसको disable कर रहे हैं. So lusr mgr.msc, go to users, administrator, right click, properties, account is disabled, apply. It's done. Previously I was trying to do तो it was prompting me कि access denied. पहले जब हम ये चीज यही परफॉर्म आरएन पे कर रहे थे तो हमको बोला था आपके पास परमिशन नहीं है, यू आर नॉट हैविंग द परमिशन, बट राइट नाउ आई एम एबल टू डू. क्लिक ऑन ओके, थिंग इज डन, चीजें हो गई. दिस इज हाउ वी मेड द राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. इस तरीके से हम लोगों ने राम को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बनाया. राइट नाउ you all are having 5 minutes of time to write down the steps and send it to me over the chat. आप सबके पास 5 मिनट का टाइम है. टाइप कीजिए, लिखिए और भेजिए चैट बॉक्स में. ठीक है, 5 मिनट्स. आई वांट 20 स्क्रीनशॉट्स ओवर हियर इन द चैट, और 20 स्क्रीनशॉट हो या इमेज हो मेरे चैट बॉक्स में होने चाहिए. वाई एवरीवन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सर फिर से बोलिए सर, नेट नहीं आ रहा, मेरा कटकट आया वॉइस. बोल रहे हैं कि आपके पास 5 मिनट का टाइम है. जो भी डेमोन्स्ट्रेशन किया उसका स्टेप्स लिखिए और यहाँ पे चैट बॉक्स में इमेज भेजिए. हाथ से लिखना है, कॉपी के ऊपर लिखिए और भेजिए. 20 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, हमको 20 स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे चाहिए आपकी इमेजेस. ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? डू इट गाइस. हेलो सर. यस सर एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन हुआ थोड़ी देर पहले, तो मुझे पता नहीं एक्चुअली करना क्या है. तो आप अभी ज्वाइन हुए हैं? कितना देर? हाँ थोड़ी देर पहले सर. कितना देर हुआ? 5 मिनट सर. 5 मिनट सर. एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था, अभी आया मैं थोड़ी देर पहले. चलिए ठीक है, वेट कीजिए. ओके. आपका एंड उसके बाद अपन कहेंगे क्योंकि हमको थोड़ा सा बनाना ही है. कावेरी, आई वांट द हैंड रिटन. आई वांट हैंड रिटन. आया नहीं, आपको दिखाना है. आई वांट हैंड रिटन बोल रहा हूँ. निखिल नेहरा, ये किस चीज का? व्हाट इज दिस थिंग वाज अबाउट? व्हाट दिस थिंग इज अबाउट? ये यूजर क्रिएट का है सर. हम क्या बोले हैं आपको? सर एडमिनिस्ट्रेटर डीएक्टिवेट करना राम के लिए. डीएक्टिवेट करना है? नहीं सर, अब चेंज करना है राम. राम को एडमिन बनाना है, उसका स्टेप दीजिए. ओके. उसका स्टेप दीजिए. ओके.
मैंने चैट में भेज दिया था। चैट में नहीं चाहिए शुभम, हैंड रिटन चाहिए, ये नहीं चलेगा। रिटन नहीं तो भेज। शुभम का आया, शुभम कोई आप हैंड रिटन भेजिए, ये नहीं चलेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सर अभी रिटर्न करके भेजें तो ये नहीं चलेगा। अभी रिटर्न है। यस सर। जस्ट लेट मी हैव अ चेक। वो दो शुभम है ना, एक शुभम कुमार है, एक शुभम कोइक है, तो शुभम कोइक के बारे में बात करें। Sir, can I take 5 more minutes? Okay, very well. No problem at all. शुभम कोइक, no, शुभम कुमार, ये क्या किया है आपने? पहले विंड आर्मी का है, उसके बाद LURSM में। किस चीज के लिए? ये सर डिसेबल करने के लिए है। हमने ये डिसेबल है। यस यहाँ तो एक्टिवेट लिखा हुआ है आपका, हाउ टू एक्टिवेट द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। सही बात है। और हम क्या बोले हैं? शुभम कुमार। यस सर। हम क्या बोले हैं? राम को एडमिन बनाने के लिए उसको। यहाँ पे राम है कहीं पे? जी नहीं। तो फिर क्या लगा कि सर को स्क्रीनशॉट भेज देंगे, सर भी स्क्रीनशॉट देख लेंगे, हो जाएगा? जी लिखिए और भेजिए अभी।